Thank you all of you for having your camera on. You know, we connect almost like 70 to 80% with each other through visually. And if I'm not able to see you, I'm sure you can see me. But if I'm not able to see you, for me, you are not there. So it's very important for me to have you in front of me, see you, and you all have such beautiful faces. So it's very important for me to see who all are my students. In case if your camera is off for more than a couple of seconds for any good reason, I'm really sorry, I will be removing you. And it will be marked like you're absent. You'll have to sort out with Dr. Uditi how you want to, check about your attendance or whatever it is. And also those who join later, just for your information, this program is being recorded and the recording is going to be shared with your director. Having said that, any idea, why are we meeting today? What is this program all about? Nobody knows? So Harshita, if you will have your camera switched off and on again and again, the screen, my screen changes actually. Position of the participants changes, so it disturbs us. So I request you to keep your camera on so that there's no unnecessary disturbance. Yeah. So any idea why we are meeting? Akshat? Soft skills development, interaction. Okay. Thank you, Akshat. I think quite precise. Nitesh, what do you say? Why are we meeting? What is your understanding? Ma'am, for learning soft skills. मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही नितेश. Is there some challenge in your device or what is it? Sure. Many soft skills and नितेश बहुत अच्छी क्लियर आवाज नहीं आ रही. I don't know what is the reason. आपने मेरे ख्याल से 2-3 लोगों ने फोन से ज्वाइन करा हुआ है. आइडियली यू शुड बी ज्वाइनिंग फ्रॉम योर लैपटॉप. उससे ये होता है कि हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं, तो इट लुक्स फील्स मोर लाइक इन द क्लासरूम. अभी क्या हो रहा होगा कि यू विल बी एबल टू सी ओनली वन ऑफ अस हु इज स्पीकिंग. तो अगर पॉसिबल है तो आई थिंक यू शुड ज्वाइन using your okay. Khushi, can I request you to have your camera on? Yes, ma'am. Thank you, Khushi. या नितेश, आप बता रहे थे कि क्या प्रोग्राम है ये? मैम सॉफ्ट स्किल सीखने के लिए. सॉफ्ट स्किल सीखने के लिए. सॉफ्ट स्किल में क्या आता है, क्या क्या आता है? इफ आई कैन आस्क ऑल अदर्स टू स्पीक. अंजलि क्या कहते हो? अंजलि कुंगोत्रा. ओके, अंजलि क्या कहते हो? Ma'am, soft skills, they usually like they're skills that you have, like for example how you communicate with others, how you carry your image, etc. Very nice. So you have quite good understanding of soft skills. So Gunjan, if I may ask you, do we really need these skills? Yes, ma'am. क्यों चाहिए? Communicating with patients and with colleagues, Mm-hmm. seniors and junior staffs.
Very true. I think you're very right. It's very important to know what is the right way of, talking to your patients. Of course, patients के साथ तो बाद में बात करोगे. But right now, I am sure you are interacting with your teachers and with your classmates. आपके पास तो juniors भी हैं, तो उनके साथ भी आप लोग interact करते हो. So do you think you need this? If I may ask, अर्पिता, आपको लगता है हमें जरूरत है इसकी? Yes, ma'am. क्या जरूरत है अर्पिता? If you can explain me, like why do we need it? मतलब आफ्टर आप लोग इतने स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तभी एम्स जम्मू में आपका सिलेक्शन हुआ है. आई एम श्योर इतनी मेहनत करके आप लोग यहाँ पहुंचे हो. बट देन व्हाई डू वी नीड टू वर्क ऑन सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स? क्यों जरूरत है इनकी अर्पिता? क्लैरिटी नहीं है अर्पिता, क्लैरिटी नहीं है. इट्स ओके. अगर क्लैरिटी नहीं है तो आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली. कोई और बताना चाहेगा क्यों जरूरत है इन स्किल्स की? कंचन, क्या कहते हो आप? कंचन, आपकी शायद ऑडियो कनेक्टेड नहीं है. आर यू स्पीकिंग? आप कुछ बोल रहे हो? आई एम नॉट एबल टू हियर. मुझे बाकी लोग सुन पा रहे हैं कंचन की आवाज को? कंचन, या तो ये जो आपने लगाए हुए इनको हटा के बात करो. मे बी समटाइम्स दिस डिवाइस इज नॉट फंक्शनिंग. मैम नेटवर्क इशू. नहीं, अब सुनाई दे रहा है. अब सुनाई दे रहा है. यस मैम. हाँ, लगता है हमें सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है. यस मैम. क्यों जरूरत है? आफ्टर ऑल आप लोग इतने मतलब यू ऑल आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स एंड यू आर हियर आफ्टर so much of hard work. Why do we need this kind of program for MBBS students? Do we lack these skills? Do you think we lack this skill? क्या कहते हो खुशी? Yes, ma'am. Do we lack these skills or do we have it ample? Some of us are not very good these skills. That also we need these programs to enhance those skills for the ones. Thank you. So you think we require such programs to enhance our skills? Yes, ma'am. आयुष, क्या कहते हो आप? Why do we need this program? You all are such bright students. You have already secured your seat in AIIMS Jammu. So why the hell do we need this program? हम सॉफ्ट स्किल जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हुआ वो हमारे पर्सनालिटी को काफी डेवलप करता है. एक बेटर पोजीशन हमें रहा है पेशेंट के सामने या फिर हमारे पुलिस के सामने. वो लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने में मदद करेगा. साथ ही लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होता है. Very good. So you have quite good understanding of the soft skills. अच्छा, अभी जैसे हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, अभी जैसे शुरुआत करी हमने. So if I may ask Harshita, so are we really exhibiting our soft skills and interpersonal skills in the right way, in the right manner? Yes, ma'am. Should I repeat my question, Harshita? Yes, ma'am. So मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी हम लोगों ने प्रोग्राम की शुरुआत करी और ऑलमोस्ट हमारे 20 मिनट्स होने वाले हैं. तो
क्या हमने सही सॉफ्ट स्किल्स एग्जिबिट करे एक दूसरे के प्रति? Yes, ma'am. इज इट? बाकी लोग क्या कहते हैं? अक्षत क्या कहते हो? Yes, ma'am. करे? Yes, ma'am. क्या सब लोग अक्षत और हर्षिता के साथ एग्री करते हैं? से यस एंड नो, इट्स ओके, दोनों तरफ ठीक है। क्या आप सब लोगों ने जो सॉफ्ट स्किल्स एग्जिबिट करने चाहिए, क्या हमने करे सब लोगों ने? हाँ भी और ना भी, एम आई राइट? अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी तो पेशेंट हैंडलिंग तो नहीं शुरू हुई आप लोगों की? हैव यू स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद पेशेंट्स? Yes, ma'am. थोड़ा बहुत कर रहे होगे। क्या हिस्ट्री ले रहे हो? Yes, ma'am. सो सपोज आपके सामने पेशेंट बैठा हुआ है और आप उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो और वो पेशेंट आगे से आपको जवाब नहीं दे रहा, या जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हो, कोई खास एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हो, कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, मैं पूछ रही हूँ आप जवाब नहीं दे रहे हो, अगर पेशेंट आपके साथ ऐसे करता है, हाउ डू यू थिंक what will be the kind of your relationship with your patient? मल्लिका क्या कहती हो? मैम, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होगा क्योंकि हमारे बीच में मतलब काफ़ी डिफरेंसेस आएंगे, काफ़ी लूप होल्स रह जाएंगे अगर हम कुछ हिस्ट्री लगे रहे हैं या एग्जामिनेशन कर रहे हैं, और प्रॉपर नहीं हो पाएगा, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन। You know, you can miss almost 50% of the diagnosis if you're not able to make your patient open up and speak. और पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन होती है बड़ी प्रिविलेज इंफॉर्मेशन होती है, बड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, और जब हम उनको कंफर्टेबल नहीं कर पाते, जब वो बोलते नहीं है, जब वो अपनी बात बताते नहीं, जैसे अगर सपोज डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो, अब्यूज की बात हो, ड्रग अब्यूज की बात हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की बात हो, तो ये बड़ी पर्सनल और बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। पेशेंट बहुत इजीली दे विल नॉट कम आउट विद दिस इंफॉर्मेशन। सो फॉर यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू विन योर पेशेंट्स कॉन्फिडेंस। पर बहुत बारी ऐसा होगा कि आप पूरा केस वर्कअप करके लेके जाओगे और जैसे ही आपके टीचर के पास आप लेके जाओगे कि सर या मैम ये केस मैंने वर्कअप करा है, ये इसकी डिटेल्स है, और उनको लगेगा कि देयर इज समथिंग मोर दिस पेशेंट हैज नॉट शेयर्ड, और बहुत प्यार से पेशेंट के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि क्या इसके अलावा भी आप कोई दवाई ले रहे हैं क्या? एंड पेशेंट सडनली वुड कम आउट विद दिस इंफॉर्मेशन, हाँ जी मुझे टीबी है, मैं टीबी की दवाई ले रहा हूँ या ले रही हूँ, या मुझे फलानी तकलीफ है मैं उसकी दवाई ले रही हूँ। Then you will be surprised कि why did this patient not share all this information with me? And quite possible I was not able to build rapport with the patient where I could make my patient comfortable and speak up. So ultimately soft skills का purpose आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अच्छा चलो वो भी बाद में बताते हैं, उसकी भी डिस्कशन करते हैं। Now if I may ask you, in terms of percentage, what do you think, what percentage of your success will come from your communication and interpersonal skills? Write in the chat box. What percentage of your personal and professional success will come from your interpersonal and communication skills? Write in the chat box.
It's okay. I'm not asking for an exact answer. I'm looking for what is your understanding. Is it 10%, 20%, 30%, 40%, whatever. It's perfectly all right. And I'm not looking for the right answer. I'm just trying to understand what is your understanding. Okay, Kanchan says 50%. Okay, good guess. Anjali also feels 50%. Good guess. 40 to 50%. Ayush says 70%. Okay, Khushi says 50%. Nitesh, what do you say? Akshat says 50%. 50 to 60%. Gunjan also says 60%. Okay. 50%. Ayushi says 60 to 70%. So according to a study by Harvard, there's a combined study done by Harvard and Stanford University and Dale Carnegie Institute. To everyone's surprise, they found out that 85% of your personal and professional success comes from your communication and interpersonal skills. So what they did, they followed up the alumni of Harvard University. So anybody who was in Harvard, I'm sure must be a bright student. So after a while, they got in touch with these students who were passed out of Harvard and they were very well settled in their life to check how happy, successful, and well-positioned they were. So they were assuming that students who were academically doing extremely well, they should be actually the most successful and well-placed people. To everyone's surprise, people with average IQ, but with higher EQ, which actually impacted their communication and interpersonal skills, were far more successful than students who had high IQ. And they estimated that 85% of your success will come from your communication and interpersonal skills. So if all of you are at AIIMS Jammu, I would say your IQ is already established. Your hard work, your seriousness to the program, desire to be a doctor is already established. But 10 years down the line, not all of you are going to be equally successful. Some of you will do extremely well. You will have established practice, be it your private practice or in a service sector. And some of you will be just average. And the primary reason for that success or average performance will be your ability to communicate effectively and build quick rapport with your patients and your staff and all others who are working with you. So among your friends also, you can see friends who have good interpersonal skills, good communication skills. They are very quick to build rapport with the other classmates, with teachers, with juniors, and of course later on with patients. Do you agree with me? Have you observed this? So don't take this program as something like, you are forced to attend. Nobody can teach you. I believe in Socrates' philosophy, who says, I cannot teach anybody anything. I can only make them think. And I always move with that philosophy.
by just asking you to sit here, having your camera on, maybe that's what I require to at least initially speak to you and to help you understand that why we are connecting. But in case, if you are not interested, if you're not enjoying, if you're not finding it useful, I have no way to force this information on you. But yes, if you interact, if you participate, if you value this program, definitely we can make best out of it. This could even be a turning point for a lot of you, because you'll get to understand what is the right way of connecting with your classmates and teachers. And ultimately, what we're going to discuss is going to help you work better with your patients. So it's a golden opportunity to see how you normally behave and then what is the right way of behaving. So with this short background, are we good to go? Are you all with me? Yes, ma'am. So if I may ask you to rate your own communication and interpersonal skills in your notebook. I hope all of you have a copy and a pen with you. It's okay. I give you 5 seconds time, 10 seconds time to get up and get a copy and a pen. Go ahead. I'm waiting for others to have their camera on. So if I may ask you to rate your own communication and interpersonal skills. You don't have to share in the group. You don't have to share in the group, but for your own understanding. How good do you think you are in terms of your communication and interpersonal skills? Write it for your own understanding. So that should give you an idea of your starting point. Of course, what we're going to discuss is not going to completely change or suddenly bring a 100% increment, but then it will be a good beginning to start with. You'll have an idea where you stand, and then you'll also have a clarity that where do I need to head forward. Okay, so before we go further, I would like to have introduction of each one of you. So I'll give you a minute's time to prepare your introduction. 1 minute. And then you have to present your introduction in 30 seconds. So let's see how you are able to introduce yourself in the most impactful manner in 30 seconds. So be ready. I will start my introduction first and then ask all of you to introduce yourself. So somebody will have to time the activity and say, okay, 30 seconds over. Who is ready to take this responsibility? See, if you don't come forward to take responsibility, who will take the responsibility?
Malika, are you taking responsibility? Can I ask you to take the responsibility? Okay, ma'am. Yes, ma'am. So when everybody starts introduction, you have your stopwatch on so that you know when it is 30 seconds. So you get 1 minute time to write about yourself, whatever you want to share in your introduction. Your time starts now. Okay, time's up. Ready? So I'll quickly share my screen and share my introduction with all of you. Give me a second. So friends, I'm Dr. Indu Arneja, founder, director, Indian Institute of Healthcare Communication. Probably this is the only organization in the country that is working towards promoting clinical communication among doctors and other healthcare professionals. So I'm visiting faculty to a number of organizations, and with Maulanas at Medical College, Delhi, I'm working for the last almost 10 years, where I'm working with the interns on their clinical communication skills. So it's a full one-day program that I hold with the students, where I teach them how do you go about interviewing your patient. So from my experience of working with MBBS students, I wrote this book for medical students. It's about, fundamentals of clinical communication for medical students. So if you can, grab a copy of this book, it will help you in developing the right skills in handling people around you. So this is in a nutshell about me. And I request Ayush to introduce himself. So Malika, now you are timing the introduction. Ayush, go ahead, please. Yes, ma'am. Good afternoon, all. I am Ayush Raj. I am from Motihari, Bihar. I am a student of AIIMS Jammu. My hobby includes playing chess. Your hobbies? Chess. Chess. Okay. Okay. Thank you. So, Gunjan, may I request you to introduce yourself? Good morning, all. I am Gunjan Agarwal from Patna, Bihar. I am a second prof student of AIIMS Jammu. My hobbies are painting and dancing. Very nice. Thank you, Gunjan. So, Akshat, could you please introduce? Myself, Akshat Garg. I am from Sawai Madhopur, Rajasthan. I am second prof student at AIIMS Jammu, and my hobbies are playing cricket, video games, and chess. Thank you, Akshat. Kanchan, could you please introduce? Good afternoon, ma'am. Myself, Kanchan Lata. I am from Chiru, Rajasthan, and I am student of MBBS, and I am interested in drawing and painting. Thank you, Kanchan. Nitesh,
Could you please introduce yourself? Good afternoon, ma'am, and all. Myself, Nitish Kumar Gupta, pursuing my second year MBBS student from our Indian Institute of Medical Sciences, Jammu, and I belong to the Savai Madhopur, Rajasthan, which is known for the Ranthambore National Park. And my hobby is listening music and playing cricket. Thank you. Thank you, Nitesh. Khushi, could you introduce yourself? Good afternoon, everyone. Myself, Khushi Kumar. I'm from Jaipur, Rajasthan. I'm a second year MBBS student at AIIMS Jammu. My hobbies are mostly playing sports, reading novels, and some books also, listening to music. And I also like watching movies and documentary series. And I pretty much like to participate in a lot of things. Also, that's all. Thank you, Khushi. Thank you. Thank you. Wonderful. So, Malika, can I request you to introduce yourself? Good afternoon, everyone. My name is Malika Goyal. I am from Bathinda, Punjab, and currently I am pursuing MBBS second professional year in AIIMS Jammu Institute. And I have a keen interest in dance and playing sports, but kind of developing it. And other things, I like to listen to music and watch movies. Thank you, ma'am. Thank you, Malika. Thank you. Archita, if I can request you to introduce yourself. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. My name is Harshita Gupta. I'm a resident of Udhampur, Jammu and Kashmir. I'm 20 years old and I'm a student of AIIMS Jammu, second prof student. And as far as my hobbies are concerned, I like cooking and playing badminton. And I also like listening to music. I have completed my studies from APS Udhampur. And that's all about myself. Thank you so much. Thank you, Harshita. Arushi, can I request you to introduce yourself? Good evening, everyone. I am Arushi and I'm from Firozpur, Punjab. I like traveling and dancing is one of my hobbies, and playing different sports is one of them. Thank you. So, Arpita, if I may ask you to introduce. My name is Arpita Soni. I am from Ajmer, Rajasthan. I am second prof student at AIIMS Jammu. And my hobbies are painting and crafting and playing chess. And I also love to be around the nature. Very good. Thank you, Arpita. Thank you. Anjali, can I request you to introduce? Good afternoon, everyone. My name is Anjali Pandutra and I'm from Gurdaspur, Punjab. I'm a second year student at AIIMS Jammu. And I enjoy playing different sports, reading novels, and listening to music. I would describe myself as someone who likes to participate in different things. I enjoy taking up a new hobby quite frequently. That's all. Okay, thank you so much. Thank you, Anjali. So anybody who is left to introduce? Anybody who's left to introduce? Done, everybody? Okay. So what did you observe when I asked you to introduce yourself? Without naming anybody, what did you observe from each other's introduction? What aspects could you kind of guess or assume about each other? Although I know you know each other very well. What all could you see when each one of you were introducing? Okay, write in the chat box in case if you're hesitant to speak. Write in the chat box what all did you observe in each other's introduction. Don't name the person, please, because we don't want to call anybody's name, but in general, what did you observe?
So could you see some of you were speaking at a very fast speed? Some of you had very low volume. Could you observe this or no? Or it's my observation only? So on these bases, write your observation about each other. Or if you found something very interesting, very good, that you felt that, oh, somebody really talked in a great manner about oneself. So were you listening when they were speaking? Were we listening? So your patients, when they will speak, a lot of things they will not say, but you'll have to, guess based on their body language, their tone of voice, and their overall communication. So it's only when you are listening and also observing them, you'll be able to find the finer details of the communication. Any idea what percentage of communication happens non-verbally? Take a guess, write in the chat box. What percentage of communication happens non-verbally? Do you understand what is non-verbal communication? अक्षत पता है ना non-verbal communication किसको कहते हैं? किसको कहते हैं non-verbal communication? बिना बोले इसमें शब्दों का काम नहीं है ना? जिसमें शब्दों का कोई काम नहीं है. So what is everybody's guess? Write in the chat box. What percentage of communication happens non-verbally? $70 to 80%. Anjali, quite close guess. Okay. Ayush also says 80%. Again, quite good guess. Mallika says 70%. Arpita also says 70%. Quite good guess, I would say. Akshat says 80%. Okay. What do others say? Nitesh says 75%. Khushi says 80%. You'll be surprised to know 93% of the communication is non-verbal. 93%. Out of that 93%, 38% is your tone of voice and your quality of voice, which is called paralanguage. Tone of voice, speed of speaking, volume, all that is part of paralanguage. 55% is your body language. So right from the way you are sitting and your facial expressions and your eye contact, you are communicating with me. So in the classroom with your teacher, with whom you're going to be meeting on a regular basis, or you're already meeting, if you are not making appropriate eye contact, and if you don't have right expressions on your face, and if the kind of face you're showing me here, if that's the expression you're giving, tell me, what are you communicating to your teacher? What do you think can be the misunderstanding between you and your teacher? If this is the facial expression, look at yourself. Don't change your expressions. Please don't smile. Control yourself. No, now you're smiling. Of course, this face is very bright, very beautiful. But the kind of expression you have been giving me till now, if this is the expression you are sitting with in the class, what are you communicating to your teacher? Do you appear interested or uninterested? And when
She asks you a question and you don't reply like you're doing right now. Again, what are you communicating? I'm there, but I'm not there. So getting into AIIMS Jammu was one task. You have achieved that milestone. But that does not guarantee you being successful in your life till you use of these formative years in the right manner. So your quality of interaction with your teachers, with everyone in the college is going to decide your success in life. So when I asked you to introduce, I actually noted down. I noted down some of the things that I observed. Some of you were very, fast to speak. So if that's the way you speak, people will not understand what you're saying. And you also lose impact. People who speak faster, they appear, in hurry or anxious or inconfident. So very mindfully, you have to learn where you learn to speak in a manner that is, the speed is, something that is comfortable for somebody to listen and understand. So even tomorrow when you will be interacting with your patients, if your speed of speaking is very fast, they will not understand. They will be scared to ask you to repeat. And if they don't ask you, and if you don't get to know whether they have understood or not, there can be a huge error. For example, when you are explaining about the medicines that the patient has to take or follow-up that the patient has to make, and if you are not able to explain in an appropriate manner, they will not understand and they may not ask you to repeat. So there can be a huge communication gap. Then I could see body language also when you were speaking, communicated a lot with me. Some of us had good language command. Some of us do not have that good command over the language. So I know we are coming from varied background. A lot of you may be using Hindi as your primary way of communication at home and even at school. So all of a sudden, getting into a college where everybody is speaking English can be challenging for you. And as a result, it can gag you. बहुत बारी ऐसा होता है, हमें पता होता है कि इसका जवाब क्या है, पर क्योंकि हमें अंग्रेजी नहीं आती, तो हम अपना कॉन्फिडेंस वहाँ लूज कर जाते हैं. We shy the situation, we become, scared and upset and anxious, and we don't answer. So one message that I want to give you here is, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बोलो. अगर बोलोगे नहीं, तो जो आपके अंदर है वो सामने वाले को कभी पता नहीं लगेगा. I will never get to know what you know, how much you know, how knowledgeable you are. So make it a habit to speak. अगर अंग्रेजी में हाथ बहुत अच्छा नहीं है, it's perfectly all right, speak in Hindi. But at the same time, keep this as a target that in next 6 months, I'm going to work on my language. Because we all know English is an international language. You require it not only for your program, but tomorrow when you're going to, present in some conferences, attend some meetings and go about, different programs. So there you will definitely require good command over this language. So there is no escape route. But if you are thinking by the end of 5 years, I'll have better English, no. You will have to mindfully work on your language. So keep this as a target that in next 6 months, I'm going to work on my language, English language, and I'm going to be fluent in it. Slowly things will start changing. Then some of you were using a lot of curtsies, greetings, and even when you ended your introduction, you said thank you. Some of us were just speaking right away. And then confidence level. Some of you had a lot of confidence when you were speaking, while others were just trying to speak minimum. Your introduction is your verbal visiting card, and you never know when it can actually get you a wonderful opportunity. For example, in classroom, when teachers ask you something, and when you
respond, and you respond confidently, and you raise your hand, and you're ready to participate, automatically the opportunities coming your way will be very different from those students who are just keeping quiet and not participating at all. So your personal growth comes from your ability to communicate and build rapport with your teachers. I got an excellent opportunity just because I could introduce myself very effectively. If I may share my experience with all of you, I had gone as a student for one program. I was a participant in the program, and there was a very senior government official who had come to take this session for all of us. So he was taking everybody's introduction, and even I introduced myself. But somehow I had this feeling that your introduction has to be very, very dynamic, very impactful. So I would normally write what I want to say about myself. I wrote just key points that I needed to highlight in my introduction, and I introduced in that manner. After the session was over, we were having tea, and this doctor, who was a very senior government official, he came up to me and he said that we do programs for doctors, 4 programs in a month. We work on their clinical communication with patients, and we are looking for somebody who can cover this topic for us. So can you take this program? Which I agreed, and I did one program in one of the hospitals. The medical superintendent who was there, she came to introduce me to the audience, and I did the program. And the feedback that she sent to the secretariat was that please don't get this program done just for a handful of doctors. Get it done for everybody who is handling patients. And can you guess how many programs I did after that? Just guess. अर्पिता, मैं अपना एक प्लेजर मोमेंट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, और जो एक्सप्रेशन आप मुझे दे रहे हो, मुझे नहीं लग रहा कि आप मेरे साथ एंगेज हो. है ना? क्या कहते हो अर्पिता? क्या लगता है? Around 200? Okay. Nitesh says around 200. Good guess. और कोई guess? और कोई guess? 100. Ayush says 100. अर्पिता क्या कहती है? Anjali says 100. Okay. 170. कंचन बड़ा स्पेसिफिक बता दिया. Okay. Khushi says 150. Gunjan says 100 plus. I did 500 programs. 500 programs for 2 years. Every day I was going to one or the other hospital. And then it was skyrocketing. I did around 1,500 to 2,000 programs in the last 10 years. Virtually every day I'm in one or the other program. Every day. And right now I'm not in India. I'm in US. And our timings are exactly opposite. You are in your comfort zone. You joined the program at 2 p.m. And you know what time it was for me when I got up for this program? 3 a.m. in the morning. And when we started, it is 4:30 a.m. Nothing comes easy. But if you are proactive in your approach, nobody can stop your growth. So your college time with your teachers, with your faculty, is your playground. Make best use of this opportunity to grow yourself as a beautiful human being. Don't hesitate. Be confident. Speak confidently. So when I asked you to introduce yourself, know what are your strengths, what are you good at, so that you never know, tomorrow somebody might need your services. Maybe your faculty might ask you to, represent the college somewhere. So who will get the chance to represent AIIMS Jammu?
not the one who do not speak, but the one who speak well, who connect well, who have good rapport with the teachers, who are following, the guidelines effectively. So your own personal growth majorly depends on the way how you conduct yourself. Does it make sense? So participate. That's the idea. Okay? Okay. Now, the next task that we are going to do is draw a circle in your notebook. Draw a small circle. So in this circle, write me. It's you in this circle. Draw another circle around it. And in that circle, write the names of the people whom you consider are your immediate go-to people, like to whom you would immediately seek help or talk to if you need any kind of guidance, support, or help. You can even write initials. You need not write the complete name because that will take you longer time. So if it's your parents, you can write P. If it is your sibling, you can write S. Anybody, your friends, whatever, just write in that. So after you have done this, draw another circle outside it. Please, okay. Done. In that circle, write the second set of people you think you can rely upon. I'm sure some people you have kept in the first circle, who are your immediate go-to people. And the second circle will have people, second set of people who you think you can rely upon. Okay. So if I may ask you to write in the chat box, who all come in your first circle? If you write in the chat box, whom all have you kept in the first circle? किसका नाम लिखा है? Parents, sibling, close friends, cousins. I agree. Okay. Akshat says best friends. Okay. Good. So Akshat, best friend from college or from school time? I'm from school time. I understand. Okay, Malika says friends and family. Gunjan says parents, siblings, close friends. Parents, brother, close friend. Arpita says even Ayush says parents and close friends. Rachit also says parents, brother, close friends. Okay, you have given the name Nitesh. Who is Rahul? मैम फ्रेंड ही है कॉलेज में. क्या क्या क्या? कॉलेज फ्रेंड ही है. कॉलेज फ्रेंड है यहाँ पे? हाँ, क्लासमेट है? वेरी गुड. और ये फुलवारिया कौन? अच्छा, राहुल फुलवारिया उसका पूरा नाम है. ओके, फाइन. Friends and parents. Okay, good. And then Khushi also says parents, brother, and best friends. And who all come in your second circle?
Close friends and few cousins. Okay. खुशी close friends जो है यहाँ college के या school time के? खुशी क्या कहते हो? Both college and school. Okay. Gunjan says relatives and friends, close friends and few cousins. Okay. Ayush says distant relatives and batchmates, relatives and close teachers. Malika says teachers. Which teachers, Malika? मैम कॉलेज में जैसे एक आधे टीचर से बात होती हो तो. Wow, very nice. Anjali also says friends and teachers and relatives. Now, should I tell you something? Since you are going to be in hostel and you have already been in hostel, your first help will come from your teachers and your classmates and your college staff. But this will not happen automatically like the kind of relationship you enjoy with your parents. This relationship has to be created and nurtured. But in case if you have any problem, maybe you require some help, maybe you are unwell, maybe you have some concerns, of course you can talk to your parents. But your parents and your family probably cannot physically come and help you in that situation. But your instant help is available in terms of your teachers, your classmates, and the college staff and hospital staff. But again, that will not happen automatically. That is something you will have to really, really create. You'll have to work on it. So if I may ask you, how can you develop good rapport with your teachers? Share some ideas, either in the chat box or you can unmute and speak. How can you have good rapport with your teachers? You can also unmute and speak, because if the answer is very long, you can just unmute and speak. Or you can write whatever is comfortable. Okay, Malika says respecting them. Okay. Okay. What do others say? अंजलि क्या कहते हो? देखो, अगर हमें क्लैरिटी नहीं है टीचर्स के साथ हम रैपो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो इसका मतलब है हम बिल्ड कर ही नहीं पाएंगे. And there always will be a gap between you and your teachers. Whereas your teachers are your true mentors. They are real, ready help, readily available. But are we connected with them? Do we enjoy that kind of relationship where I can go to them and tell them that this is what is my problem? Only one of you have written respecting them. What about others? Did you ever think on these lines, anybody? Say yes and no, it's okay. If you didn't think, it's perfectly all right. I understand. Because this is something we don't normally talk about or we don't really consider important. But let me tell you, it's so important to have wonderful relationship with your teachers, because they are the one who will be able to help you through thick and thin. Being honest and responsible. Okay, Kushi, again, a good idea. I think most important is being proactive in your approach when you are interacting with your teachers. For example, when teacher is saying something, how many of you raise hand and say, yes, I'll do? How many of you make eye contact with them? How many of you smile and say, good morning, ma'am, or good morning, sir? How many of you go prepared for the class? One of the reasons why we are sitting like this in the class, expressionless face, because we don't know what the teacher is going to teach. And we are just, you may be very, very seriously listening, but then the expression is communicating that, yes, I'm just looking at you and I'm hearing you.
let's take a detour. For example, teacher has taught you something today, and at the end of the class, you ask, ma'am, what are we going to discuss tomorrow? So usually how we are studying, whatever teacher teaches you, you will go home, go to your room, and in the evening, you will sit and read that once again so that you understand what they have taught you. Am I right? This is how you're reading right now, studying right now. That's the approach you're taking. And then next day again, teachers teaches something, and then you are, going to your room and then studying in the library or in room, whatever is comfortable. Now, reverse the order. For example, teacher has taught you today something, and towards the end, you ask, ma'am, what are we going to discuss tomorrow? You go to your room or library and read that topic. Now, if you have read that topic, at least some amount of familiarity you have created with the subject. Now you go to the classroom. And when teacher is teaching you, one, you already have some idea about the topic. Second, you may have some questions that you would like to ask, or you may have some information that you would like to share, and especially if they ask some question, you will be able to promptly answer it because you have read it. Now imagine the quality of interaction between you and your teachers. In the first instance, you are a passive listener. I'm not saying you're not attentive. You may be very attentive. You may be a very serious, sincere, responsible student, but there is no interaction. If you really want to thicken your relationship with your teachers, you have to be proactive in learning. See, teaching is teacher's responsibility. Learning is your responsibility. Please remember that. And if you learn proactively, the whole fun of teaching and learning can be so enjoyable. Now, if as a teacher I know, suppose if you already had questions in your mind, and the moment I started speaking and you started asking me questions, imagine the quality of interaction we will have. On the other side, I have come with a plan to teach you, and I'm making all my efforts to engage you. Of course, thankfully, you all are very nice students. But then my job becomes, tougher when I have to create interest in you. But if you have studied the topic, I know by reading you will not be able to understand 100%. You require teachers to explain you. But imagine the fun you will have if you have already read that topic briefly. You have some idea, 10%, 15%, 20%. It's okay. Even that's good enough to start with. Like when I asked you, what are soft skills? And why do we need that? Some of you gave me brilliant answers. I was impressed that, okay, you have that clarity that these skills are important. But suppose if I was asking you a simple question, like what is the importance of soft skills, and you were not saying anything. So for me, even to tell you what soft skills are and why we need soft skills would have been very laborious. So make it fun for you, make it fun for them, and then imagine the quality of learning you all will. Just reverse the way you study. Go home and study every day. I'm okay with that. So after you have already read once and you have attended the class seriously, you go back and study. You will not spend as much as time as you would have studied had you read it for the first time. And then go through the content that you're going to be discussing next day. Now you know, okay, these topics are going to be discussed. We have Google at hand. If you even type that word, you get a very beautiful understanding of that term. Even getting that familiarity helps you to be more interactive in the classroom. So if you want to be, have good rapport with your teachers, you will have to act very responsible. Student who participates, student who asks intelligent questions, student who come to the class on time, go on time, work right in the right manner, they automatically get identified. And pardon me for saying this honestly, as teachers, we all like to interact with the students who are proactive. See, if you are not participating, if you're not answering, maybe I'll try once, I'll try twice, I'll try thrice, but after a while I'll give up. I say, I don't have so much of energy to push this student to talk to me. Whereas
If you are proactive, you are answering, you are asking questions, you are showing interest, teacher will automatically pay more attention to you. And please remember, wherever attention goes, energy flows, things grow. This is the thumb rule. I repeat, wherever attention goes, energy flows, things grow. So as I said, 10 years down the line, all of you will not be at the same success point. And your effort at this time will decide your success later. Now, in the classroom, if you are proactive, you are talking, you are interacting, you are in the eyes of your teacher. Oh, this student is very, very, very hardworking, very smart, very responsible. So your growth chart is going to be very different. And if as a student, I think I'm here at AIIMS Jammu, so I have done my job and I'm nothing more to do and I'm just going to sit passively and listen. Yes, you may learn, but the quality of learning will be very different. Now, if I may ask you, what are the other ways that you can build good rapport with your teachers? Write your answers. I've given you some idea. Try thinking now, what are the other ways that can help you build good rapport with your teachers? Try thinking. Okay, coming forward and participating in tasks, very good. I think you're coming out with ideas now. What do others say? अर्पिता, क्या लिख रहे हो? कुछ लिख रहे हो? Are you writing something or no? लिखा? कुछ लिखा अर्पिता ने? मतलब इंटरेक्शन करना चाहिए पहले से पढ़ के, फिर हम उनसे क्वेश्चंस पूछे. Very good, very good. So उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू करो with me, है ना? अगर यहाँ पे सवाल करोगे, बात करोगे, जवाब दोगे, स्माइल करोगे, इंटरेस्ट शो करोगे, I will automatically know that you are taking things seriously. So like Anjali has written, but all of you can also think of many ways. आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है, कोई काम दिया जाता है, उसको आप टाइम पर करते हो. As simple as coming to the class on time. You will find invariably some students will always come late. Happens. If you regularly come late or frequently come late, what do you think is going to be teacher's impression about you? That you are? What are you if you're not coming on time? Akshat? हाँ, नितेश बोलो नितेश. Latecomer. हाँ, लेट कमर. और जिस स्टूडेंट के लिए हम ये मानते हैं कि ये हमेशा लेट कमर है, उसके बारे में हमारी क्या इमेज होती है हमारे दिमाग में? वो सीरियस नहीं है पढ़ने के लिए. Imagine now. So, do you want that kind of image in the eyes of your teachers? Never, never, never. So just imagine. And I heard it somewhere and I found it so useful that all my, things I follow with this rule. Somebody said this to me, but I don't know if I read it in some book or something. It said, you can never be on time. You can never be on time. You can either be before time or you can be after time. And choice is yours. अगर 9 बजे की क्लास है, कितने बजे की पहली क्लास होती है?
8 बजे. 8 o'clock? Yes, ma'am. 8 o'clock? So अगर 8 बजे की क्लास है तो हम कभी 8 बजे नहीं पहुंच सकते. या तो हम 8 बजने से 5-7 मिनट पहले पहुंच सकते हैं या 8 बजने के 5-7 मिनट बाद पहुंच सकते हैं. और ये हमारी चॉइस होती है. But if you value it, that being in the class before time, one, I can settle myself, I can get a seat of my choice, I can sit with the people that I want to sit with. I will not have to go and sit at the back. I can sit at a place where I can see the blackboard or whiteboard or projector. You can make yourself comfortable. Or I can choose to go 5 minutes late. One, being identified as latecomer. Second, may have to listen some adverse comment from the teacher. Then sit whatever place is available. And then be a laughing stock by others. Especially if I'm regularly late, teacher might say, you can never be on time. And then others will laugh at me. So things as simple as this. Going on time, before time, acting responsible. When teachers ask something, we don't make eye contact. We start looking down. Do we do that? करते हैं ना हम लोग? करते हैं? जब टीचर कोई काम कहती है, कौन करेगा ये काम? हम नीचे देखना शुरू कर देते हैं. What are you communicating? उससे क्या कम्युनिकेट होता है? अगर आप हमें कोई कुछ काम कह रहा है और हम आई कांटेक्ट नहीं बना रहे, हम नीचे मुंह कर लेते हैं, व्हाट आर वी कम्युनिकेटिंग? That I'm not interested. I'm not wanting to do it. Now, do you want to communicate that to your teacher? On the contrary, अगर आप में से कोई भी एक बच्चा हाथ रख दे कि मैं ये करती हूँ या मैं करूंगा, उस बच्चे के ऑटोमेटिकली नंबर बन गए. So it's a golden opportunity to grow here. And सिर्फ academics will not decide your success. Of course, academics is very important, no doubt about it. But your personality as a human being should flourish, grow, beautify. You make a lot of contacts with people when you are responsible and forthcoming. And having, good teachers in your touch will automatically define your growth chart, provided we value that. So in case if you require any help or any assistance, that will only happen if you have acted very responsible. Of course, you will always get help and support from teachers, but then proactively teachers also would like to help those students who have been very responsible. And sometimes even if you have not been able to do something, they'll take a liberal view. It's okay. You have always been a very responsible student. It's all right if you have not done it. So that's how you build rapport with your, teachers and colleagues. How about classmates? How important are they? Actually, they are your true support system. Again, अपने आप नहीं आएगा ये. You will have to create. You will have to really, work on that relationship, make things better. So if I may introduce one interesting concept here, that's called Johari window. किसी ने सुना हुआ ये concept? Johari window सुना हुआ किसी ने? So Joe and Harry, they were two social scientists who gave this concept that all of us have 4 aspects of our personality. So let me share this screen with you to explain you from that. Yeah.
Okay, so before we go further, I will ask you to do an activity. We'll talk about it in a while. So you can see these adjectives on your screen. Is it visible to all of you? Is it No, visible? ma'am. Oh, I'm so sorry. Is it visible now? Is my screen visible? Laptop Yes, screen? ma'am. Yes, ma'am. Now is it visible? Yes, ma'am. Okay. So you can see these 55 adjectives written on the screen. So choose 5 adjectives for yourself that you think really, really define you. You could even choose 10, but minimum 5. And once you have done it, write done in the chat box. Don't spend too much of time. Just pick 5, 7, or 10 that you think really define you. Done? Done. Keep it to yourself. You don't have to write in the chat box. Keep it to yourself. You can write in your notebook and write done in the chat box that I've done. It could be 5 or 10, like minimum 5. Done? Should I stop sharing? Okay, 2 of you have written done. Okay, done. Almost all of you have done, I think. Yeah. Okay. Now I need one volunteer. One volunteer. Anybody? अभी हमने क्या डिस्कस करा था? Your opportunity to grow comes from your. Nitesh, आप करोगे volunteer? Yes. Okay, very nice. Thank you. So Nitesh, you have identified 5 adjectives for yourself that you think really define you. Am I right? Mm-hmm. Yes. Okay. So now all others, like we are other 10 people, besides you and me, we are going to see the same screen once again, and we are going to write at least one point that you think will fit well for Nitesh
and you will write in the chat box. Is the task clear to everyone? Clear? So I'm sharing the screen once again. Have a look at the screen and then write one word that you think will fit well for Nitesh. Nitesh, you have to quickly note down whatever everybody is writing for you. So I'm opening the chat box. You can also open the chat box. And you have to write in the chat box, please. Quickly, yeah. फटाफट लिखते जाना नितेश. Yes. So ऑलमोस्ट सबने लिख दिया. ठीक है नितेश, लिख दिया? Yes, ma'am. ओके. सो इसमें से कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो आपके लिए लोगों ने यूज करे और वो आपकी लिस्ट में नहीं थे, जो आपने अपने लिए लिखा उस लिस्ट में नहीं थे? Cheerful, ma'am. एक तो चेयरफुल आपकी लिस्ट में नहीं था? नहीं मैम. ओके. तो चेयरफुल लिख लो. उसके साथ कोई और एडजेक्टिव जो आपने अपने लिए नहीं सोचा था लेकिन आपके फ्रेंड्स ने आइडेंटिफाई करा? Knowledgeable, ma'am. ओके. चेयरफुल और कॉमा नॉलेजेबल लिख लो. उसके अलावा किसी ने डिपेंडेबल भी लिखा आपके लिए? Yes, ma'am. सही है. वो आपने लिखा हुआ था अपने मैंने लिए? लिखा हुआ. ओके. फ्रेंडली आपने लिखा Yes. हुआ था? हाँ. Yes. फ्रेंड इंटेलिजेंट भी लिखा हुआ था? No, ma'am. हाँ, तो इसको लिखो इंटेलिजेंट. ओके. हैप्पी? Yes. हाँ. अच्छा. अक्षत ने लिखा काम. Yes. काम लिखा तो you consider आपने लिखा. Very nice, very nice. So you know what we did here? I asked Nitesh to choose a set of adjectives for himself कि वो अपने बारे में क्या सोचता है. फिर हमने बाकी लोगों को कहा कि वो नितेश के बारे में क्या सोचते हैं. तो जैसा मैं बता रही थी कि जो एंड हैरी दे वर टू सोशल साइंटिस्ट और उन्होंने कहा कि ह्यूमन पर्सनैलिटी को हम 4 टुकड़ों में बांट सकते हैं. We can divide it into 4 parts. So the first part, according to and this is called Johari window. नाम इसका उन्होंने जोहारी विंडो दिया, जो एंड हैरी. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि आई नो एंड अदर्स ऑल्सो नो. तो जो नितेश ने अपने बारे में लिखा और जो बाकी लोगों ने भी कहा. नितेश क्या क्या आया उसके अंदर? जो मैंने सोचा और ने भी सोचा वही ना. हाँ एग्जैक्टली. काम, डिपेंडेबल एंड फ्रेंडली और हैप्पी. वेरी गुड. चलो ये 4 चीजें. ठीक है. ये 4 चीजें वो हैं जो आपको भी पता है अपने बारे में और जो औरों को भी आपके बारे में पता है. एंड दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड पब्लिक सेल्फ. ठीक है. एक और पार्ट होता है हमारी पर्सनैलिटी का, उसको कहते हैं प्राइवेट सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा एडजेक्टिव है नितेश जो आपने अपने लिए लिखा लेकिन किसी ने भी नहीं उसको आइडेंटिफाई करा? नर्वस एंड इंट्रोवर्ट. वेरी गुड. तो ऐसी ग्रिड बना लो, ऐसी अपनी ग्रिड बनाओ. ठीक है. तो नर्वस और दूसरा आपने क्या बोला? इंट्रोवर्ट. ठीक है. तो ये हो गया आपका प्राइवेट सेल्फ का हिस्सा. इसका मतलब है हमारा एक पर्सनैलिटी का हिस्सा वो भी होता है जो सिर्फ हमें पता होता है
लेकिन दूसरों को नहीं पता, अदर्स डू नॉट नो। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स लोगों ने आपके बताए जो आपको ही नहीं पता था अपने बारे में। जैसे उन्होंने कहा नॉलेजेबल, Yes, ma'am. इंटेलिजेंट, कहा ना उन्होंने, है ना? Yes, और ma'am. क्या क्या था, और क्या क्या था? चीयरफुल, Knowledgeable, intelligent, cheerful. हाँ, 3 चीजें। तो ये वो एस्पेक्ट है आपकी पर्सनैलिटी का जो सबको तो पता है, इसलिए लोगों ने आइडेंटिफाई करा, लेकिन आपको स्वयं पता नहीं। और एक और एस्पेक्ट हमारी पर्सनैलिटी का होता है जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ अननोन एक्टिविटी, जिसमें कि जिसके बारे में ना हमें पता है ना किसी और को पता है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। लेकिन स्टडीज क्या बताती है कि जिन लोगों का पब्लिक सेल्फ बड़ा होता है, जिसमें कि आपको अपने बारे में पता है और लोगों को भी आपके बारे में पता है, जिनका पब्लिक सेल्फ बड़ा होता है, दे लीड अ मोर सक्सेसफुल, हैप्पी, चीयरफुल लाइफ। क्योंकि आप एक ट्रांसपेरेंट लाइफ लीड कर रहे हो, आपको अपने बारे में पता है और लोगों को भी आपके बारे में पता है। अगर आप नॉलेजेबल हो, चीयरफुल हो, हेल्पफुल हो, फ्रेंडली हो, आपको पता है कि मैं ऐसा हूं और लोगों को भी आपके बारे में पता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज अमंग योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर्स विल बी वेरी डिफरेंट। सो डेफिनेटली आपका क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन बहुत अलग हो। जिन लोगों का पब्लिक सेल्फ बड़ा होता है, उनका इंटरेक्शन विद अदर्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब दूसरा केस लेते हैं, वो लोग जिनका प्राइवेट सेल्फ बड़ा होता है। प्राइवेट सेल्फ में देखो, हम सबका एक प्राइवेट सेल्फ होता है जिसमें कि वी हैव थिंग्स दैट वी डोंट वांट टू शेयर विद पीपल। इट कुड बी योर पास्ट experiences of life, it could be your childhood memories, it could be घर पर कुछ ऐसा है जो आप नहीं बताना चाहते, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो आप अपने पास रखना चाहते हो। सबके साथ है, ये सबके साथ है। लेकिन कई लोग जो है वो ज्यादा चीजों को कवर अप करके रखते हैं, बताते नहीं, शेयर नहीं करते हैं। कोई बात जो बताई जा सकती है वो भी नहीं बताते, तो उन लोगों का प्राइवेट सेल्फ बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको हम हिंदी में मैं अगर बोलूँ तो हम कहते हैं ये बहुत गुन्ना है, या ये बहुत इंट्रोवर्ट है, ये बहुत चुप है, ये शेयर नहीं करता, बताता नहीं है। तो एज अ रिजल्ट जिनका प्राइवेट सेल्फ बड़ा हो जाता है, क्या लगता है उनकी इमेज क्या होगी फ्रेंड्स के बीच में? क्या कहते हैं बाकी लोग? आयुष क्या कहते हो? अक्षत क्या कहते हो? जिन लोगों का प्राइवेट सेल्फ बहुत, सॉरी, सोशलाइज नहीं कर पाए, सोशलाइज नहीं कर पाए। सपोज I'm nervous and I'm introvert and I'm not comfortable talking to people. Naturally, I'll just stay quiet. I will not interact. I will not participate. How will that affect my image in the eyes of others? लोग इसको क्या क्या समझ सकते हैं अगर मैं सोशलाइज नहीं करती हूँ तो? How can I be seen as a person? क्या कुछ लोग ये मान सकते हैं कि मैं रूड हूँ? हाँ मैम, ईगो है उसमें बात एटीट्यूड ज्यादा है। अगर मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही हूँ, तो पहली बात तो आप तो कहोगे कि ये बहुत छुपा कर रखने वालों में से है, शेयरिंग नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। अब छोटा सा एग्जांपल है कि किसी ने कहा कि बुक है ये वाली मेरे पास है पर मैंने नहीं दी, या किसी ने पूछा ये नोट्स है तेरे पास में, आपसे पूछा और आपके पास नोट्स हैं और आपने नहीं दिए। बाद में उनको पता लगा आपके पास नोट्स थे या आपके पास कोई बुक थी। सामने वाले पर आपका क्या इंप्रेशन जाएगा? That you are not honest, you are not trustworthy. So कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो क्या लोग आपकी हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे। So if your private self is
bigger than your public self, risk is that people will not trust you, people will not come close to you, because उन्हें पता है कि आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो, आप सच नहीं बोलते हो, आप झूठ बोलते हो, चीजों को छुपाते हो। तीसरा केस है, कई लोगों का ब्लाइंड स्पॉट बहुत बड़ा होता है। ब्लाइंड स्पॉट बड़ा होने में ये है कि आपको अपने बारे में अच्छे से नहीं पता। अब अगर 1 मिनट के लिए अपनी अच्छाई नहीं पता तो भी नुकसान है कि मुझे अपनी अच्छाई नहीं पता, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसानदायक है कि मुझे अपनी कमी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, हम में से कई लोग जो है जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, बुरी तरह बात करते हैं, दूसरे लोगों को इंसल्ट कर देते हैं, बुली भी करते हैं, बुराई करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं। एंड ऑल दैट इज पार्ट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, कि आपको अपनी कमी नहीं पता कि मैं इस तरह से करती हूँ या मैं करता हूँ। नाउ टेल मी, विल पीपल लाइक योर कंपनी? will they want to be with you? Will they trust you? तो आप देख सकते हैं कि अगर ब्लाइंड स्पॉट बड़ा है तो भी आपकी ग्रोथ नहीं है, अगर आपका प्राइवेट सेल्फ बड़ा है तो भी आपकी ग्रोथ नहीं है। द ओनली गुड वे इज कि हम अपनी पब्लिक सेल्फ को बड़ा करें। तो कोई मुझे बता सकता है कि हम पब्लिक सेल्फ कैसे बड़ी कर सकते हैं? कोई आइडिया है किसी को? कैसे कर सकते हैं? नीतीश, आप कुछ बोल रहे हो? अनम्यूट करो। Self-respect. Yes, one is self-introspection. Regularly sit with yourself, check what are my qualities and what are my weaknesses. हमें दोनों ही पता होनी चाहिए, strengths भी और weaknesses भी। अगर मुझे अपनी प्राइवेट सेल्फ बड़ी करनी है, अगर मुझे पब्लिक सेल्फ बड़ी करनी है तो मुझे प्राइवेट सेल्फ और ब्लाइंड स्पॉट दोनों कम करनी है। प्राइवेट सेल्फ कैसे कम करी जा सकती है? What is the way to reduce the size of private self? अर्पिता, क्या कहते हो? मैम, being honest, हम जैसे हम वैसे रहे लोगों के साथ। ओपनिंग अप, ये जरूर है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो आप सबके साथ शेयर नहीं करना चाहोगे। दैट्स ओके, दैट्स ऑलराइट। बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जिसको छुपाने की जरूरत नहीं है, बट हम कई बार बहुत सीक्रेटिव प्ले करते हैं। एज अ रिजल्ट पीपल लूज ट्रस्ट इन अस। तो प्राइवेट सेल्फ जितना छोटा रखोगे उतना आप खुश रहोगे। सो आई एम नॉट सेइंग कि क्रॉस रोड पर जाकर सबको बताना शुरू कर दो कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मेरी रिश्तेदारी में ये प्रॉब्लम है। नो, आई एम नॉट सेइंग। वन, you should have set of people with whom you can go and confine, जहां पर आप अपनी ऑनेस्ट सारी बात कह सकते हो। It could be your parents, it could be your friends, it could be your siblings. They are more like your soulmate, जिनके साथ आप अपनी बात कर सकते हो। But in general, in class, if you are nice and kind to everybody, with your friends and with your batchmates and your juniors and your patients and your hospital staff and your college staff and your teachers, और इन सब के साथ अगर आप एक ट्रांसपेरेंट और ओपन इंटरैक्शन रखते हो, ऑटोमेटिकली आपका प्राइवेट सेल्फ छोटा होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी स्टूडेंट के साथ, अभी आप लोग सब घर पे हो? Yes, लोग घर पे, सपोज कोई बात होती है, किससे बात करोगे? घर पे कोई बात होती है जो तो आपको अपसेट कर देती है। इट कुड बी एज सिंपल एज कि मेरी अपनी क्लास में किसी अपनी बैचमेट के साथ लड़ाई हो गई, किससे बात करोगे घर पे? पेरेंट्स या सिबलिंग्स, किससे? नीतीश, दूसरे बैचमेट से भी कर सकते हैं। हाँ, जिसके साथ आपको कंफर्टेबल है आप उसको फोन करो, ठीक है? आप उसको सारी बात बताते हो कि ये हुआ, उसने ये बोला, मैंने ये बोला, ये बात हो गई, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो एक तो जब आपने ये बात बताई तो आपका प्राइवेट सेल्फ कम हुआ क्योंकि आपने अपनी बात को कहा।
अब जब आपने अपनी बात बताई तो सामने वाला क्या करता है? अपना अर्शिता जो क्या रखेगा कर... वो गलत या हाँ सही। बोलो नितेश, क्या होगा? वो अपना जो रखेगा क्यों गलत है सही, तो मतलब यस, हम उसके बारे में पता चले। एग्जैक्टली। अगर वो आपका वेल विशर होगा, है ना, जिस दोस्त के साथ आप बात कर रहे हो नेचुरली वो आपका वेल विशर होगा, वो आपको जरूर फीडबैक देगा कि नितेश यहाँ पर आपने गलत करा, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, या आपका ये वाला पॉइंट ठीक है, आई थिंक उसकी गलती है, उसको ये नहीं कहना चाहिए। बट मोस्टली जैसे अगर आप अपने परिवार के किसी के साथ बात करोगे, वो डेफिनेटली आपको फीडबैक देंगे कि नहीं, आई थिंक कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए बिकॉज आपने 5 साल बाहर रहना, सो दैट्स नॉट द राइट वे, या यू शुड बी हेल्पफुल, आई थिंक आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, कुछ भी एक फीडबैक वो देंगे। सो जब आप अपनी बात सामने वाले को कहते हो और उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, तो आप अपना प्राइवेट सेल्फ ऑटोमेटिकली छोटा कर रहे हो, बिकॉज यू आर अनबर्डनिंग योरसेल्फ। ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नितेश आपका एग्जाम्पल लूं, आपने 2 चीजें अपनी आइडेंटिफाई करी जो आपने बहुत अच्छा से आइडेंटिफाई करी। आपने कहा मैं इंट्रोवर्ट हूं और मैं नर्वस हूं, है ना, आपने ये 2 चीजें अपनी प्राइवेट सेल्फ की कही। अब सपोज ये आप अपने किसी बैचमेट से बात करते हो, या अपने टीचर से बात करते हो, या अपने घर में अपनी फैमिली में किसी के साथ बात करते हो, या फॉर एग्जाम्पल मेरे से बात करते हो कि मैम साइकोलॉजिस्ट हैं, इनसे मैं बात कर सकता हूँ कि मैम मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। सो आपने जैसे ये मेरे साथ शेयर करा या अपनी टीचर के साथ शेयर करा, तो आपने अपना प्राइवेट सेल्फ कम करा, बिकॉज यू हैव ब्रॉट इट टू माई नॉलेज, यू ब्रॉट इट टू योर फ्रेंड्स नॉलेज कि भी मुझे ये चैलेंज आ रहा है या मुझे ये दिक्कत आ रही है। जैसे ही आप अपनी ये वाली बात किसी के साथ शेयर करोगे, सामने से आपको फीडबैक आएगा, वो डिस्कशन होगी, आप अपना पॉइंट कहोगे, सामने वाला अपना पॉइंट आपको समझाएगा, एक फीडबैक आएगा। उस फीडबैक में हो सकता है वो आपको कहे कि हाँ मैं एग्री करता हूँ नितेश, कि मैं भी नोट करता हूँ कि यू आर इंट्रोवर्ट, और मेरे ख्याल से लेकिन इंट्रोवर्ट होने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, बिकॉज ये तो ठीक है कि आप ज्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, बट देन आप इंटरैक्ट नहीं करोगे तो कैसे कैसे क्लास में अपने आप को एस्टैब्लिश करोगे, और अगर टीचर के साथ अच्छी रैपो नहीं बनाओगे तो कैसे आप अपनी लर्निंग एनहांस करोगे। तो वो आपको जो फीडबैक मिलता है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लाइंड स्पॉट कम होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कहा कि आप बहुत एग्रेसिव हो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, आपने अपने बैचमेट से जाके कहा कि मेरा फलाने लड़के से झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हो गया, बिल्कुल हाथापाई होते होते बची है, ठीक है, और आपका फ्रेंड वो आपको फीडबैक देता है कि हाँ नितेश, मैंने बहुत बड़ी ऑब्जर्व करा है कि आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हो, आई थिंक दैट्स नॉट सेफ, स्पेशली कल को हमें पेशेंस हैंडल करने हैं, पब्लिक में काम करना है, तो एंगर एग्रेशन तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आई थिंक यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, कि किसी तरीके एंगर मैनेजमेंट या एग्रेशन मैनेजमेंट पे काम करो। तो आपने अपना प्राइवेट सेल्फ कम करा, सामने वाले ने आपको फीडबैक दिया, ऑटोमेटिकली जब दोनों चीजें कम हुई तो आपका पब्लिक सेल्फ बढ़ा। एंड दिस इज द वे टू ग्रो इन लाइफ। सो विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स, जिनके साथ आपने 5 साल बिताने हैं, और सिर्फ 5 साल नहीं बिताने हैं, दीज विल बिकम योर फ्रेंड्स फॉर लाइफ, क्योंकि धीरे धीरे आप इनके इतने क्लोज आ जाओगे कि इनके अलावा उस फर्स्ट सर्कल में आपको कोई नहीं दिखेगा, बिकॉज ये ग्रुप ऐसा होगा जहां पर आप हर बात अनइनहिबिटेड डिस्कस कर सकते हो। इट कुड बी अबाउट पेशेंट हैंडलिंग, इट कुड बी अबाउट टीचर्स, इट कुड बी अबाउट फैमिली इश्यूज। ये बात अलग है कि इसमें भी 2 सर्कल बनेंगे या 3 सर्कल बनेंगे। पहला सर्कल वो होगा जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होंगे, जिनके साथ आप अपनी हर बात शेयर करोगे। सेकेंड सर्कल वो होगा जिनके साथ एक अच्छी दोस्ती है और जिनके साथ यू आर हेल्पफुल टू देम, दे आर हेल्पफुल टू यू। और एक सर्कल वो होगा जिसमें बाकी सारे क्लासमेट्स आएंगे, जिसमें कि एटलीस्ट हेलो हाय तो है, उससे ज्यादा नहीं है। सो इनर सर्कल में 1 या 2 या 3 लोग हैं, नथिंग लाइक इट, बहुत बढ़िया। बट सेकेंड सर्कल जो है उसमें यू कैन हैव मोर पीपल, और अगर आपका सोशल सर्कल अच्छा है, इंटरैक्शन अच्छा है, आप हेल्पफुल हो, आप नाइस टू पीपल हो, तो आपका सेकेंड सर्कल भी उतना ही अच्छा है। एंड इफ यू वांट टू ग्रो,
इफ यू वांट टू गिव गुड, अब इसमें सोच के देखो कि वो लोग भी हैं हम में से जो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, या जो बहुत जो इंट्रोवर्ट हैं, जो बोलते नहीं है, अगर हमने एक अच्छा माहौल क्रिएट करा तो वो लोग भी ओपन अप होना शुरू हो जाए. दे विल ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर कंसर्न्स. वो भी अपना प्राइवेट सेल्फ कम करना चाहेंगे. सपोज आपने अपनी फ्रेंड को बताया कि मेरा आज मेरे भाई से बहुत बुरी तरह झगड़ा हो गया, और हमेशा हम जब भी टीवी देखने बैठते हैं झगड़ा हो जाता है. मैं कहती हूँ ये वाला टीवी प्रोग्राम देखना है, वो कहता है ये देखना है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. एंड देन योर फ्रेंड से मेरे घर में भी यही प्रॉब्लम है, मेरी और मेरे भाई की हर वक्त झगड़ा होता रहता है. अब वो चीज जो हम बताने में इतना हेजिटेट कर रहे थे, जब हमने अपनी फ्रेंड से बोली और उसने भी यही जवाब दिया, क्या फीलिंग आई? क्या फीलिंग आई? सपोज आपने बताया कि मेरे भाई से झगड़ा हुआ किसी भी चीज को लेकर, टीवी को लेकर, फोन को लेकर, खाना खाने को लेकर, और आपकी फ्रेंड आगे से कहती है हाँ मेरे भी घर में यही हुआ, मेरे भी भाई के साथ यही झगड़ा हुआ, क्या फीलिंग आती है? तो कॉमन है, सबके साथ होता है, कोई हाँ चिंता की बात नहीं। एग्जैक्टली. ओके, इसका मतलब सबके घरों में होता है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है. देयर इज नथिंग टू हाइड. पेरेंट्स के साथ कितनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि वो अलग तरह से सोचते हैं, बच्चे अलग तरह से सोचते हैं. आप कुछ करना चाहते हो, वो मना करते हैं, उनका सेफ्टी कंसर्न है, उनके और बहुत सारे कंसर्न है. आपका मन है कि मुझे ये करना है, कॉन्फ्लिक्ट होता है. बट व्हेन यू शेयर विद योर फ्रेंड्स कि मेरी मम्मी के साथ ये बात हुई है, मेरे पापा से ये बात हुई, तो वो आगे से दोस्त से कहता है कि हाँ मेरे भी पापा के साथ ये प्रॉब्लम है. वो हर चीज में इतना ऐसे ऐसे बोलते हैं कि उनका बोलने का तरीका बहुत एग्रेसिव हो जाता है. देन यू रियलाइज ओके, सिर्फ मेरे ही पापा गुस्से में नहीं बोलते, सभी के पापा ऐसे हैं. एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर. सो स्मॉलर द प्राइवेट सेल्फ बेटर इट इज. उसमें ये नहीं मैं कह रही कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हर एक के साथ शेयर करो, बिकॉज अभी यू आर फॉर्मिंग अ न्यू रिलेशनशिप. You need to check, you need to test, are they trustworthy? Can I share my personal information? But बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत पर्सनल नहीं है और बहुत सेंसिटिव नहीं है, they can be shared. कोई फ्रेंड बुक मांगने आ गया, मेरे पास बुक है, rather than saying कि नहीं मेरे पास बुक नहीं है, if I say बुक तो है भाई पर मैं तो पढ़ रही हूँ, कैसे करूँ? And then you say तू एक काम कर, तू पिक्चर फोटो खींच ले जो पेजेस तुझे पढ़ने हैं, बुक नहीं दे सकती. या मैं अभी पढ़ रही हूँ, मुझे 2-3 घंटे लगेंगे, इसके बाद में मैं दूसरे नोट्स पे मूव करूंगी, आई कैन गिव यू दिस बुक आफ्टर 3 hours. सो दैट्स बीइंग हेल्पफुल. बहुत बारी हम इस चीजों में बहुत सीक्रेटिव हो जाते हैं, बुक्स को लेकर, नोट्स को लेकर. किसी फ्रेंड का फोन आ जाए, पढ़ाई चल रही है, क्योंकि मुझे पता है छुट्टियों के बाद आपको एग्जाम्स है ना, कि हो गए हैं, हो गए फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर, यस आपके नहीं है. तो जिन दिनों एग्जाम्स थे, अगर कोई फ्रेंड पूछता था तैयारी कैसी चल रही है, तो जवाब क्या था? कुछ भी नहीं, पढ़ना ही नहीं हो पा रहा, मन ही नहीं लग रहा, नींद ही आ जाती है पढ़ने बैठता हूँ तो. बट एक्चुअली अंदर से सब पढ़ रहे होते हैं, अंदर से सब मेहनत कर रहे होते हैं, पर बताने में क्यों हेजिटेट करते हैं ऑनेस्टली? पता नहीं हमें क्यों लगता है कि नहीं बताना हम पढ़ रहे हैं. So this is something we are keeping in private self, which need not be. On the contrary, आप कहते हैं हाँ मैंने तो पढ़ लिया, तो आगे से अगर फ्रेंड कहते हैं मुझे तो ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप कहते हो अच्छा मैं ये पढ़ लूँ, फिर मैं तेरे को ये समझा दूंगी या मैं समझा दूंगी. And then when you need their help, they will be forthcoming. So rather than cutting each other down, you support each other, and that's where you create positive energy. That's where you create supportive system for each other. As friends, you can help each other not only for your studies, but in general, socialization, adjustment. हमें से कई लोग बहुत humble background से हैं, कईयों के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, कई लोग फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ नहीं हैं, कुछ लोग सेमी रूरल बैकग्राउंड से हैं. Can we be good to them?
Can we be nice to them? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में आ चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे होम सिक फील कर रहे होंगे, कई बच्चे डिप्रेशन में होंगे, कई एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, बहुत सारे मेंटल हेल्थ कंसर्न्स होते हैं जब आप न्यू कॉलेज में ज्वाइन करते हैं. Can you be available to help them? Can you observe that this student is looking very dull or low, sad? Can you provide a support system to them? That is true meaning of friend. That is true meaning of classmate. और हमारे सामने बच्चे डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, एंजाइटी में जा रहे होते हैं, हम कुछ भी नहीं करते बल्कि हम मजाक उड़ाते हैं या उसकी पीठ पीछे बातें करते हैं. So that's what is the real, way of connecting with your friends, juniors, teachers, and your college staff. आपको पता है ये प्रोग्राम मटेरियलाइज करने के लिए कितने महीने से सब लोग लगे हुए हैं? Any idea? Can you believe? Almost like 6 months. 6 महीने पहले आपके डायरेक्टर सर का मुझे फोन आया कि we want to do this program for our students. And it took us almost 6 months because आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज इजीली नहीं होती. टू एंड फ्रो हमारा वो चलता रहा, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये देना है, ये देना है, ये बताओ. एंड वी डिड. लॉट ऑफ एफर्ट गोज टू मेक थिंग्स हैपन फॉर ऑल ऑफ यू. उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है. यू हैव टू टेक दैट ओनर्स. Okay. So before I close, have all of you done that questionnaire that was given in the group? And you have those 4. Yeah. So you have all those 4 scores with you. 4 scores हैं आपके पास में. We will discuss these scores tomorrow. Keep these scores ready. और अगर किसी ने नहीं करा हुआ ये questionnaire, कल नहीं है. कल क्या है? कल नहीं है, परसों है ना? थर्सडे को है. नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को है, तो थर्सडे को इसको डिस्कस करेंगे. लेकिन जिन्होंने नहीं करा वो भी ये क्वेश्चन करके रेडी करके लें एंड वी विल डिस्कस. सो लास्ट 5 minutes, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? और मैं आपको और एक तरीका बताऊं अच्छा इंप्रेशन बनाने का. Always have a set of questions to ask your teacher. Teacher should know that this student is listening, is comprehending, and is clarifying if he or he does not know. Always in class, ask intelligent questions. Your teachers can identify, okay, ये बच्चा क्लास में बहुत ध्यान से हर बात सुनता है या सुनती है, जरूर सवाल करेंगे. And make it a habit to ask questions. जिनके साथ कम्युनिकेशन चैलेंज है, जो कम बोलते हैं, जो इंट्रोवर्ट हैं, जिनको कॉन्फिडेंस को लेके प्रॉब्लम है, लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम है, you can either choose to be like this and stay like this all your life. Or you can decide, I have to get rid of this. I have to make a better version of myself. And you can see yourself growing every day, every day, every day. So these 5 years are your playground. इतना अच्छा खेलो, इतना अच्छा खेलो कि when you fly out of this college, you actually go back very successful and confident and well-developed human being. So जो कल का टॉपिक है वो है प्रोफेशनल ग्रूमिंग. कल मतलब थर्सडे का टॉपिक जो है वो है प्रोफेशनल ग्रूमिंग और पर्सनल ग्रूमिंग. तो उसमें बहुत सारी चीजें बात करेंगे, राइट फ्रॉम योर ड्रेसिंग टू योर कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, बेसिक एटिकेट्स, क्यों जरूरी है, कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी इमेज फॉर्मेशन को, और एक अच्छी इमेज बनाना क्यों जरूरी है.
ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, जो आपने वो क्वेश्चनियर करा है, वो स्कोर्स को डिस्कस करेंगे. So in next class, please join on time so that we can, discuss, because these two topics we have to cover in the next class. If there are no questions, write your feedback and takeaway in the WhatsApp group. You all are member of that WhatsApp group? So write your feedback and takeaway from this session in the WhatsApp group. So I'm just taking a screenshot for everybody's attendance. So you can smile if you want, or whatever face you like to keep, you can keep. I think one of you have to have the camera on. Kiska camera band hai? Khushi ka? Khushi, are you there? कैमरा क्यों बंद कर लेते हो बार बार? चलो मैं एक पिक्चर ले रही हूँ हम सबके लिए. स्माइल so that Ayush, we can smile. I want to see you smiling. थोड़ा पास आ जाओ आयुष, पास आओ कैमरा के. Yes, and smile. And your attendance will be marked after you have given your feedback in the WhatsApp group. And let's meet on Thursday, 2 p.m. Bye-bye. Thank Take you, care. ma'am. Thank you, ma'am.